Hello everyone and welcome to the Nurselife Academy. Today we will discuss about the very important questions. और आज का अपना टॉपिक है hypertension and coronary artery disease. So let's start the topics questions. Question number one: Sublingual nitroglycerin tablets brings to work within 1 to 2 minutes. How should the nurse instruct the client to use the drugs when chest pain occur? Option A: take one tablet every 2 to 5 minutes until the pain stops. Option B: take one tablet and rest for 10 minutes. Call the physician if pain persists after 10 minutes. Option C: take one tablet, then an additional tablet every 5 minutes for a total of 3 tablets. Call the physician if pain persists after 3 tablets. Option D: take one tablet. If pain persists after 5 minutes, take 2 tablets. If pain persists 5 minutes later, call the physician. So what is the right answer? The right answer is the option C. Right answer is the option C. Take one tablet, then an additional tablet every 5 minutes. Of total 3 tablets, call for physician if the persist after the 3 tablets. Next question. Question number 2. Which of the following artery primary fits the anterior wall of the heart? Option A: circumflex artery. Option B: internal memory artery. Option C: left anterior descending artery. And option D: राइट कोरोनरी आर्टरी. यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट को कौन सप्लाई करता है, एंड द आंसर इज द ऑप्शन सी. राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. नेक्स्ट क्वेश्चन: when do coronary artery primary receive blood flow? Option A: during inspiration, during diastole, during expiration, during systole. सो कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड कब रिसीव होता है? द राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, ड्यूरिंग डायस्टोल. व्हेन द हार्ट इन ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन पोजीशन, उस कंडीशन के अंदर कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है? अपना ब्लड रिसीव होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन: प्रोलॉन्ग occlusion of the right coronary artery produce an infarction in which of the following area of the heart? occlusion कहाँ पे है? occlusion मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे हो रहा है? राइट कोरोनरी आर्टरी के अंदर. तो कहाँ कौन कौन से हार्ट के कौन कौन से एरिया के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस है? सो ऑप्शन 1 एंटीरियर, ऑप्शन बी एपिकल्स, ऑप्शन सी इंफीरियर, ऑप्शन डी लेटरल. सो व्हाट इज द राइट आंसर? What is the right answer? The right answer is the option C, inferior. ठीक है, तो राइट कोरोनरी आर्टरी हार्ट के इंफीरियर पार्ट को सप्लाई करती है. सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, inferior. Next question: prolonged occlusion of the right coronary artery produce an infarction in the which of the following area of the heart? So the right answer is the option A anterior, option B apical, option C inferior, and option D lateral. So the right answer is the option C, inferior. Option C. Next question: a murmur is heard at the second left intercostal space along the left sternal border. Which valve is this? कार्डियक मर्मर साउंड सुनाई दे रही है. दिस इज द एबनॉर्मल हार्ट साउंड. और कौन सी पे? सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पे. सो
कौन से वाल्व को इंडिकेट करती है? ऑप्शन ए एरोटिक, ऑप्शन बी मिट्रल, ऑप्शन सी पल्मोनिक एंड ऑप्शन डी ट्राइकस्पिड. So the right answer is the option C. The right answer is the option C, pulmonary. यहाँ पे अपना pulmonary valve होता है, ये pulmonary valve को indicate करती है. So the right answer is the pulmonary. Next question. Which of the following blood test is the more indicative of cardiac damage? Option A troponin I, option B complete blood count, option C creatinine kinase, and option D lactate dehydrogenase. So the right answer is the option A troponin I. Troponin I is a cardiac marker which indicate the damage of the cardiac muscles. So the right answer is the option A troponin I. Question number 8. Which of the following diagnostic tools is most commonly used to determine the location of myocardial damage? Location of myocardial damage. Option A cardiac catheterization, option B cardiac angine, option C echocardiogram and option D electrocardiogram. So अगर आपको मायोकार्डियल डैमेज के अंदर लोकेशन पता करनी है, सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन डी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. उसके लिए अपन क्या करते हैं? ईसीजी करते हैं. क्या करते हैं? ईसीजी. सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन डी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following type of pain is the most characteristics of angina? Option A knife like, option B sharp, option C shooting and option D tightness. Option D tightness. So the what is the right answer? What is the right answer? Right answer is the option D. पेन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? टाइटनेस ऑफ चेस्ट. So the right answer is the option D. Next question. Which of the following parameter is the measure determine the diagnostic blood pressure? Option A Baroreceptor, option B cardiac output, option C renal function, option D vascular resistance. तो यहाँ पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा मेजर अपना पैरामीटर होता है? सो उसके लिए अपना होता है, अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो डायस्टोलिक के लिए होता है अपना वास्कुलर रेजिस्टेंस. सो द राइट आंसर इज द वास्कुलर रेजिस्टेंस. अगर यहाँ पे अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है तो आपका अपना आंसर क्या जाता है? वहां पे कार्डियक आउटपुट. क्या जाता है? कार्डियक आउटपुट. सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन डी vascular resistance. Next question. Which of the following factor can cause blood pressure to drop to normal level? Option A kidney excretion by sodium only, option B kidney retention of sodium and water, option C kidney excretion of sodium and water, option D kidney retention of sodium and excretion of water. So कौन कौन से फैक्टर है नॉर्मल के लिए? सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन सी. राइट आंसर किडनी एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम एंड वाटर. नॉर्मल ब्लड प्रेशर लाने के लिए किडनी क्या करेगी? वाटर एंड सोडियम का एक्सक्रीशन करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. बोरोरिसेप्टर इन द carotid artery walls and aorta respond to which of the following condition? Option A change in the blood pressure, option B change in the arterial oxygen tension, option C changes in arterial carbon dioxide tension, option D changes in heart rate. So what is the right answer? ठीक है, तो बोरोरिसेप्टर कौन सी कंडीशन के अंदर एक्टिवेट होता है? जब ब्लड प्रेशर के अंदर क्या होगा? चेंजेज होगा. ड्यूरिंग द हाइपर एंड हाइपोटेंशन बोरोरिसेप्टर आर द एक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which of the following terms describe the force against which of the following terms describe the force against which the ventricles must expel blood? Afterload, option B cardiac output, option C overload एंड ऑप्शन डी प्रीलोड। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? फोर्स अगेंस्ट विच द वेंट्रिकल्स मस्ट एक्सपेल ब्लड। सो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज द आफ्टर लोड। आफ्टर लोड का मतलब होता है कि ब्लड एक्सपेल होते के टाइम जो वेंट्रिकल्स की वॉल पे जो फोर्स लगता है उसको अपन बोलते हैं आफ्टर लोड। सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following term is used to describe the amount of stress on the myocardium at the end of the diastole? मायोकार्डियम जब आपके डायस्टॉल हो रही है, पूरी की पूरी रिलैक्सेशन कंडीशन के अंदर है, तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज करेंगे? देन ऑप्शन इज द आफ्टर लोड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कार्डियक इंडेक्स, ऑप्शन सी कार्डियक आउटपुट एंड ऑप्शन डी प्रीलोड। सो द व्हाट इज द राइट आंसर? The right answer is the option D. Option D, preload. Next question. A 57-year-old client with a history of asthma is prescribed propranolol to control hypertension. Before administer propranolol, which of the following actions would the nurse take first? Monitor the apical pulse rate. Option B, instruct the client to take medication with food. Option C, question the physician about the order. Option D, caution the client to rise slowly when standing. So what is the right answer? So what is the right answer? प्रोपोनोल ड्रग्स दे रहे हैं किसके लिए? टू कंट्रोल हाइपरटेंशन। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, क्वेश्चन द फिजिशियन अबाउट द ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 hour after administering IV furosemide to a client with heart failure, a short burst of ventricular tachycardia appear on the cardiac monitor. Which of the following electrolyte imbalance should the monitor suspected? Option A, hypocalcemia. Option B, hypermagnesemia. Option C, hypokalemia. Option D, hypernatremia. So what is the right answer? पेशेंट को क्या एडमिनिस्टर किया गया है? वहाँ पे आईवी लेसिक्स दिया गया है और पेशेंट को सडनली वहाँ पे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है? सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज द हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया मीन्स द डिक्रीज लेवल ऑफ द सोडियम। अगर वहाँ पे आपने फ्रूसामेट दिया है तो सोडियम और वाटर बॉडी से क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, तो हाइपोकैलेमिया होगा और उसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा और देन पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज रिसीविंग द स्पाइरोलेक्ट्रॉन टू ट्रीट हाइपरटेंशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वुड द नर्स प्रोवाइड? और पेशेंट क्या रिसीविंग कर रहा है यहाँ पे? रिसीविंग स्पाइरोलेक्ट्रॉन, दिस इज द डायूरेटिक्स और हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट चल रहा है। ऑप्शन ए, इट फूड हाई इन पोटेशियम। ऑप्शन बी, टेक डेली पोटेशियम सप्लीमेंट। ऑप्शन सी, डिसकंटिन्यू सोडियम रेस्ट्रिक्शन एंड ऑप्शन डी, अवॉइड सॉल्ट सब्स्टिट्यूट। अवॉइड सॉल्ट सब्स्टिट्यूट। सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, avoid salt substitute. Next question, when assessing an ECG
The nurse know that the PR interval represent the time take for the PR interval. So option A, impulse to being atrial contraction. Option B, impulse to transverse the atria to AV node. Option C, SA node to discharge the impulse to beginning atrial depolarization. Option D, impulse to travel the ventricles, यानी कि PR इंटरवल. पी वेव किसको इंडिकेट करती है? पी वेव इंडिकेट करती है अपने एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को, और जो क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स है वो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट करता है, और जो पी यानी कि एट्रियम से कॉन्ट्रैक्शन से लगाकर जो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन तक पहुंचने का जो टाइम होता है उसको अपन बोलते हैं पीआर इंटरवल. सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, इम्पल्स टू ट्रेवल द वेंट्रिकल, यानी कि एट्रियम से कॉन्ट्रैक्ट हो गई वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम होता है उसको अपन बोलते हैं पीआर इंटरवल. नेक्स्ट क्वेश्चन. to evaluate to evaluate a client's condition following cardiac catheterization, the nurse will palpate the pulse. Option A, in all extremities. Option B, at the insertion site. Option C, distal to the catheter insertion. Option D, above the catheter insertion. कार्डियक कैथेटराइजेशन के अंदर अपन को पल्स कहाँ पे फील करनी है, कहाँ पे पाल्पेट करनी है? व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, डिस्टल टू द कैथेटर साइट. जहाँ पे कैथेटर लगा है उसके डिस्टल पार्ट के अंदर अपन को पल्स फिल करनी है, ताकि अपन को पता चले कि वहां पे प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा. सो द राइट आंसर इज द. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए क्लाइंट्स फिजिशियन ऑर्डर न्यूक्लियर कार्डियोग्राफी टू make an appointment for a lithium scan. The purpose of injecting radioisotope into the blood stream to detect, है ना? ऑप्शन ए, नॉर्मल वर्सेज एबनॉर्मल टिश्यू. ऑप्शन बी, डैमेज इन एरिया ऑफ द हार्ट. ऑप्शन सी, वेंट्रिकुलर इन फंक्शन. एंड ऑप्शन डी, myocardial scarring and perfusion. So the right answer is the option D. The right answer is the option D, myocardial scarring and perfusion. Next question. A client enter the ER complaining of severe chest pain. A myocardial infarction is suspected. A 12-lead ECG appears normal, but the doctor admits the client for the further testing until cardiac enzyme study are the returned. All of the following will be included in the nursing care plan. Which activity has the highest priority? Option A, monitoring vital sign. Option B, completing a physical assessment. Option C, maintaining cardiac monitor. Option D, maintaining at least one IV assess site. So what is the right answer? The right answer is the option C, maintaining cardiac monitoring. कंटिन्यू अपन को वहां पे कार्डियक मॉनिटरिंग करनी है पेशेंट को. राइट आंसर इज द ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A client is experiencing tachycardia. A nurse understanding of the psychological basis for these symptoms is explained by which of the following statements? Option A, the demand for oxygen is decreased because of pleural involvement. Option B, the inflammatory process causes the body to demand more oxygen to meet its need. Option C, the heart has to pump faster to meet the demand for oxygen when there is lowered arterial oxygen tension. And option D, the respiration are levered. What is the right answer? The right answer is the option C.
The heart has pumped too faster to meet the demand of oxygen when there lower arterial tension. The right answer is the option C. Next question. A client entered the ER complaining of the chest pressure and severe epigastric distress. His his VSR 158 by 90, 94, 24 and 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि उसके वाइटल साइन क्या है? अगर अपन वाइटल साइन की बात करें, उसका ब्लड प्रेशर है 150 बाई 90, पल्स रेस्ट 94, 24 रेस्पिरेशन एंड 99 अपना टेम्परेचर है. द डॉक्टर ऑर्डर्स कार्डिक एंजाइम. If the client were diagnosed with the MI, the nurse would expect which cardiac enzyme is rise within the within next 3 to 8 hours. Option A, creatinine kinase. Option B, lactic dehydrogenase. Option C, LDH first. Option D, LDH2. So what is the right answer? The right answer is the option A, creatinine kinase, CKM. Right answer is the option A. Next question. A 45-year-old male client with the leg ulcer and arterial insufficiency is admitted to the hospital. The nurse understands that leg ulcers of his nature are usually caused by option A, decreased arterial blood flow secondary to vasoconstriction. Option B, decreased arterial blood flow leading to hyperemia. Option C, atherosclerotic obstruction of the artery. Option D, trauma to the lower extremity. So the right answer is the option A. Right answer is the option A, decrease arterial blood flow secondary to vasoconstriction. Next question. Direct acting vasodilator have which of the following effect on the heart rate? Option A, heart rate decrease. Option B, heart rate remain significantly unchanged. Option C, heart rate increase. Option D, heart rate become irregular. So what is the right answer? The right answer is the, अगर अपन डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर दे रहे हैं तो वहां पे हार्ट रेट अपनी क्या होने वाली है? डिक्रीज होने वाली है. सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, हार्ट रेट डिक्रीज. So the right answer is the option A, heart rate are decrease. थैंक यू सो मच. इसी के साथ में प्ले स्टोर से आप हमारे द नर्स लाइफ अकेडमी के एप्लीकेशन को वहां से डाउनलोड कर सकते हो. इसके अलावा वहां से डेली फ्री टेस्ट दे सकते हो. अगर स्पेशल टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है नॉरसेट या ऑल CHO एग्जाम के लिए, DSSB एग्जाम, ESIC, PJG में HGPG, RRB या फिर MSc एंट्रेंस एग्जाम या पोस्ट BSc एंट्रेंस एग्जाम या GMERS गुजरात एग्जाम के लिए, देन डाउनलोड द ऐप एंड द ज्वाइन द टेस्ट सीरीज. अगर इसके अलावा आप प्रीवियस एग्जाम ईयर के प्रीवियस एग्जाम पेपर अगर आप लेना चाहते हो, देन वहां पे ऑप्शन अवेलेबल है. देन थैंक यू सो मच एंड द सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो एंड यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच.